या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। ओम शरद गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी योगराज की जय। हरिओम। नवरात्रि के इस पावन पर्व के तृतीय दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। Wishing you all a very happy third day of Navratri. Today, on the third day, we worship the form of Maha Adi Shakti, of Durga, and the form is known as Devi Chandraghanta. What does Chandraghanta mean? In her divine form, the Devi, the Mata, has a mukut around Chandra, around moon behind her, which is in a shape of a bell. Chandra means moon, ghanta means bell. The moon symbolizes the peace and prosperity and the calmness and coolness in the body, and ghanta is the awareness. Like when we go to a temple, we go and ring the bell to please the God, or when we have prayers in the mandirs, then we ring the bell. Her form, her way of transport, she's sitting on a tiger. She has 10 hands, and in our hands she has all the astras and shastras, which means she has all the weapons. Trishul, she has a ghanta, she has a sword, she has an axe. Then in one hand she has a kamandal, she has a lotus, she has a japamala. So when she's sitting on a tiger, she's very strong and very furious and very frightening, because she's a Devi who gets rid of all the negative energies. She teaches us, or whoever does her upasana in this Navratri times, whenever you pray or chant her Bij mantra, which is Om Devi Chandraghanta Namaha, whenever you chant her mantra, you can please her, and with that she comes with all her force, with all her Shakti, and she destroys all the evil, she destroys all the negativity in your life. If anyone has some problems in their houses, if anyone has some fights, then she helps you win those. And on the other side, she is very calm and very peaceful. She is very loving, because she is a motherly form. Mata Karunamayi. Mother is always a very loving, caring, emotional person. So on one hand, she's very strong, she's Shakti. On the other side, she's Karunamayi. She has a lotus, she has a japamala, she has a kamandal, and the motherly side. So when people do her Bij mantra, she is living in the Manipur chakra, the Navi. So there, when you are meditating her name, you should have your concentration in the Manipur chakra, which helps you progress in your sadhana. And the story behind this, why this form was taken, she is Parvati. She is the form of Parvati. So when Mata Parvati and Lord Shiva were supposed to get married, it took very hard tapasya and sadhana, as I was mentioning yesterday. Mata Brahmacharini had to do deep penance, deep tapasya to please Lord Shiva that he would marry her. So after Mata Sati passed away, in that period, Lord Shiva got detached to all worldly materialistic things. Lord Shiva was not
he was not attached to anything. He didn't have that love and compassion which he had earlier for Mata Sati. So when Lord Shiva came to the marriage ceremony of his own marriage to Parvatiji's house to see her parents, then he came in his Rudra form. He had bhasma all over his body, he had the tiger skin, he had snakes wrapped around his neck. You know Lord Shiva's Rudra form, he looks like, it's a very frightening look. And then with him he brought all his ganas, all the ghosts and all the different types of interesting characters which he had with him always. He had Nandi and he had all the Bhairavs and all the Ganas and everyone. So they all were in their forms and everyone were so frightened seeing them. Many of Parvatiji's relatives, they fainted after seeing him. Some of them just collapsed down. And seeing that Mata Parvati she took this Rudra form of herself. She became the form of Mata Chandraghanta, where she had 10 arms. She was also becoming Shakti. She had all the Astras and Shastras, and she was sitting on the tigress. And then she went and prayed to Lord Shiva. Lord Shiva, please, you are frightening all the people here. Please come back in your handsome, beautiful looking, divine form. Then Lord Shiva heard her prayers and he immediately transformed in the most beautiful looking man in the universe. And then he brought his procession, instead of all the Ganas, he brought all the Devas. Lord Indra, Vishnu, Brahma, Agni, Varun, all the Devtas came and accompanied him in the procession. And then they got married. So in one way, she was very powerful, she was very strong. She also showed her fearless form. And in one side, she was a Karunamai, she was a devotee of Lord Shiva, and she prayed and she made pranam to Lord Shiva and requested Lord Shiva to come in his humanly natural form. माता चंद्रघंटा का शरीर जो है, उनके मस्तक पे अर्धचंद्राकार रूपेण घंटा के आकार में एक चंद्र है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा रखा गया था। चंद्र का मतलब चंद्रमा और घंटा मतलब हमारे मंदिर में जो घंटी होती है, चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है और शांति का प्रतीक, और जो घंटी है वह जब हम लोग मंदिर में जाते हैं और घंटा बजाते हैं भगवान को दिखाने के लिए कि भगवान हम आ गए, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो ढोल नगाड़े घंटी ये सब मंदिरों में आदियों में बजते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का निवास मूलाधार चक्र में होता है, जो हमारी नाभि में रहता है। तो उसमें जब हम माता चंद्रघंटा का इस नवरात्रि के दिनों में जब तीसरे दिवस पर हम माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं, तो हमें मूलाधार चक्र को ध्यान में रखते हुए उसको उनकी आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से उनको प्रसन्न किया जाता है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो एक सिंह पे, एक शेर पे है और उनके 10 हस्त हैं। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और कुछ हाथों में उनके पुष्प, कमल और जपमाला और कमंडल है। एक तरफ तो वो करुणामयी माता का स्वभाव क्या होता है, एक माँ का स्वभाव क्या होता है, संवेदनशील, करुणामयी, जिसके अंदर प्यार भरा है, जिसके अंदर लाड प्यार भरा है। और एक तरफ आद्य शक्ति, त्रिशूल, भाला, गदा, ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो जब माता चंद्रघंटा का आप आराधना करते हैं, तो आपके घर में अगर कोई क्लेश चल रहा है या आपके किसी से कोई आपसी रंजिश चल रही है, तो उसको दूर करने के लिए माता चंद्रघंटा का उपासना किया जाता है, जिससे वह सारी बुरी शक्तियों को दूर कर देती है, जिससे वह आपके सारे पापों को भी दूर कर देती है।
और एक तरफ करुणामयी, एक तरफ हमें शांति प्रदान करती है, हमें लाभ, हमें वृद्धि प्रदान करती है अपने आध्यात्मिक जीवन में। और माता चंद्रघंटा के स्वरूप के पीछे यह सुंदर सी एक कहानी है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि माता ब्रह्मचारिणी ने बहुत तपस्या के बाद भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो जब माता सती ने अपना देह त्याग किया था, उसके बाद भगवान शिव ने इस सारे मोह माया को त्याग दिया था। उनको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वो अपने साधना में इतने विलिप्त हो गए थे कि जब वह ब्रह्मचारिणी जी से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए राजी हुए, तब जब वो और उनकी बारात लेके वो पार्वती जी के घर आए थे, तो उनका एक रौद्र स्वरूप था। सांप लिपटे हुए उनके गले में, भस्म का त्रिपुंड, पूरे शरीर पे भस्म, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, नंदी पे सवारे हुए, बागंबरधारी। और उनके जो सारे गण लोग थे, कोई भूत था, कोई प्रेत था, कोई कौन सा भैरव था, सब अलग अलग थे। तो जो माता पार्वती जी के जो रिश्तेदार थे, सब बहुत भयभीत होकर, कोई मूर्छित हो गए, कोई गिर गए। सबको इतना डर लगने लग गया उनसे कि माता पार्वती जी ये देखकर उन्होंने भी अपना रौद्र रूप ले लिया। और वो रौद्र रूप था चंद्रघंटा। वो भी शेरनी पे निकल गई, वो भी उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेके वो भी पहुंच गई भगवान शिव जी के पास। और भगवान शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की थी, वो भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हमारे पूरे परिवार वाले सब आपसे भयभीत हो रहे हैं, तो कृपया करके आप अपने सौंदर्य रूप को लेते हुए आप वापस यहाँ आइए। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना सबसे सुंदर जो अवतार लिया, उन्होंने वो अवतार लिया। और उनके साथ उनकी बारात में सारे देवता है, सारे अश्विनी कुमार और ये सब लोग उनके साथ उनकी बारात में आए थे। और फिर उनका विवाह हुआ। माता चंद्रघंटा का एक स्वरूप तो है रौद्र और एक स्वरूप है करुणामयी। तो जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हमें सुख शांति के साथ सारे दुष्ट प्रवृत्तियों को दूर करने की भी क्षमता हमको मिलती है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। Tomorrow we will continue with the fourth day and the Devi of that day. I wish you a wonderful and blessed day. May Chandraghanta Mataji's blessings be on you. May Gurudev's blessings be on you. कल फिर मैं आपको मिलूँगा अगले कथा के साथ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीन् महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शैलपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर पुरी जी योगराज की जय। हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।